My dear friends, let's understand how to use run out and run low with different prepositions. Okay, let's begin with examples. Okay, example number one. He ran out to see the aeroplane. Here, ran out means to go out of a building running. Okay, he was inside the building and an aeroplane was flying over the building. So he ran out to see the aeroplane. Okay, here ran out means to go out by running. Okay, the fuel will run out soon because the aeroplane is running low on fuel. Here, run out means to come to an end, and to run low on something means to be less than needed. So the entire sentence, the fuel will run out soon because the aeroplane is running low on fuel, means soon there will be no fuel left because there is little fuel in the aeroplane. And run out of, as you can see in the third example, I have run out of money, I have spent all the money I had. इस तरीके से पहले सेंटेंस में रन आउट का मतलब है बाहर दौड़ करके जाना, ओके, या आना। एरोप्लेन देखने के लिए वह बाहर दौड़ा। दूसरे सेंटेंस में द फ्यूल विल रन आउट सून, जल्द ही फ्यूल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि द एरोप्लेन इज़ रनिंग लो ऑन फ्यूल, क्योंकि एरोप्लेन में फ्यूल बहुत कम है, रनिंग लो, लेस दैन नीडेड, नॉट इनफ। ओके, आई हैव रन आउट ऑफ मनी, मेरा पैसा ख़त्म हो चुका है, यानी मैंने यूज़ कर लिया है जो कुछ भी था, अब मैं और फ्यूल ख़रीद नहीं सकता। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।